Good evening to all. I'm audible to all of you. Yes, ma'am. Ma'am, namaskar. Namaskar. ଆରମ୍ଭ କରିବା already time ହେଇଗଲାଣି 1 minute 2 Yes, minute already we have muted. ଠିକ ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କି ଜଣେ ମତେ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିବା କାଲି ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ଷ୍ଟପ୍ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର I think we have discussed about the organizational climate. I'm sure. yes, ma'am. Okay. Yesterday we discussed in class about the climate of an organization, how the organization must be, and how leadership is going to influence the organizational climate. What is power, and how what type of leadership is required for a good environment, for a good climate in an organization. Okay, so these things already we have discussed, and today we will focus on the other things. What is left in block 2? I think already we have discussed up to unit 5 and 3 more units left, unit 6, 7 and 8. And overall these 3 units is going to speak about the classroom environment, what should be the classroom. We have discussed yesterday regarding the organization, institution. But today we will focus specifically on the classroom, how a classroom should be, what is the role of the teacher or as a facilitator inside the classroom, how a teacher should manage the class. Okay, and other things are also there in the other units, like how we can motivate the students, what type of communication is required for the students. Okay, and different theories of motivation. So these all are the things today we have to cover within these 3 units. Yes, so we will start from classroom. In an educational institution, classroom plays a very important role. Okay, as already we know, it is mentioned in our um, national policy of education. Also, the destiny of a country is going to shape inside the classroom. କୋଉଠି ଏଟା କୁହା ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, the destiny of India is going to shape inside the classroom. କିଏ କହିପାରିବ? Okay, so classroom, as yesterday we have discussed about the institution, inside the institution, in educational institution, classroom is a unit where there is a lot of opportunity, lot of scope for interaction between the teacher and the students. Okay, that is the classroom. If we want to define what is classroom, we can say it is a place where there is ample opportunity for discussion, for interaction, for communication between student and teacher. Okay, so mostly when we talk regarding a classroom, you will close your eyes and we will think regarding a classroom. What are the things comes to your mind? How a classroom must be? Can anyone tell to me how a classroom must be? When you think regarding a classroom, according to you, how a classroom must be? From physical point of view, from behavioral point of view, from the environmental point of view, anything you can include here. Ma'am, a variety of learning space and technology. Okay, and technology, very good, very nice. Okay, so you think that nowadays a classroom, we it is impossible to imagine a classroom without technological support. Yes, then definitely there should be some scope for the technology. Definitely these all the things are not there. We will go to see the classroom before 10 years back. Yes, so when we talk regarding a classroom,
first of all we take into consideration of a physical climate of the classroom. How must be the physical climate of the classroom? Physical climate means, you understand, location, what are the material things are there, all these things will come under the physical climate of the classroom. Ma'am, positive atmosphere. Yes, calm and positive atmosphere. Okay. First of all, location of the classroom must be a suitable one. Yes, it must be away from the crowd. There must not be any outer disturbance. It must be a peace environment. Okay, it must be located in a peace environment. So that's why we mostly see educational institutes that are going to be established outskirts of the city or the town. It is very rarely, if a any type of educational institution located in a market area, in a crowded area, definitely there a lot of disturbance will be there in the teaching learning process. That's why it is always suggested to establish the educational institute out of the city, on from the by being away from the crowded area, market area, or we can say bus stand, railway station. So it must be away from that, and then only there will be a study environment. We will able to create a peaceful study environment. Okay. So location, when we are talking regarding the climate of the classroom, we must see where the classroom is located. Okay, first thing is the location. Then next we will take into consideration the ventilation, size of the classroom, how the classroom. If suppose there is a classroom, it is overcrowded, it is also not suitable for teaching learning process. According to the students, the size of the classroom must be appropriate. Okay, if it is a classroom of more students, then every student must has a appropriate space for learning, for sitting, for learning, etc. Okay, the size of the classroom is also plays a very important role, and it also has an impact in teaching learning process. What we are discussing here, this everything has the impact in teaching learning process. Location of the classroom, then we can say size of the classroom, then we can say sitting arrangement inside the classroom, lighting and ventilation in the classroom. Okay, each and everything has also the impact in teaching learning process. Are you agree with me? Or you can say no, if you are going to teach well, classroom does not play for classroom location and sitting arrangement has no impact on it. Are you agree with me? Yes, ma'am. So we must take into consideration of all such things before going to establish a classroom. Yes. What's your opinion? You all are there. Nandini, Yes, ma'am. yes. Are you agree with me what we have discussed now? All these points. ଆମେ कौन discussion कले ଏବେ? I'm classroom management. Classroom Management. management. कौन कौन point ଆମେ ଏବେ discussion कले? Just now को point गुड़ा को ଆମେ discussion कले? Classroom management ର कौन कौन point गुड़ा को ଆମେ discussion कले? ଆମେ management କଥା कोरी आसीने, classroom environment କଥା ଆମେ discussion करूचे. Okay.
How should be the classroom environment? कौन point हम discussion कले किए कहिबो? Ma'am, location, Yes, ventilation, seating arrangement. yes, lightning and ventilation. Okay, location of the classroom, whether proper lighting there in the classroom or not. Ventilation means a passing of air. Okay, ventilation is there or not, it must not be suffocated. Then it must be located in a peaceful area, and proper sitting arrangement for the students. Size of the classroom must be appropriate according to the students. So these are called as the physical climate of the classroom. Okay, and these all the elements of the physical climate of the classroom is also influencing our teaching learning process. That's why we must take into consideration of these things. Then next we will come, how is classroom management, how we will manage the class. Then there must be a question in your mind, we are going to teach inside the class, so what is the need of management? What we should, what we have to manage inside the class? As a teacher, you will enter to the class, you will teach. Students are there, they will learn. So what is the need of management? Why we will need to manage the class? किए कहबो? Is it required to manage the class? Is it required to manage the class? ମୁଁ तुमको ଏଇ କଥାଟା just ପଚାରୁଛି, ତମେ ଏଥିରେ କଣ କହୁଛ, ତମର ମତ କଣ? କ୍ଲାସ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦରକାର କି? ଆଉ ଯଦି କରିବା ଆମେ କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କ୍ଲାସ? Ma'am, manage କରିବା ଦରକାର. କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା? କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଆମେ କଣ କାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା? ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର କଥା। Yes, classroom, as already we know, it is the place of interaction between students and teacher. So there must be one teacher, but more students are must be there. So it is the duty of the teacher to manage the students, because not only to manage students, the it is also to manage the time, to manage the resources, okay, and to manage the students. So what the teacher has to manage inside the class? Many things are there to manage. First thing is that to manage the time. Whatever time is there, how to make the best use of the time is the first thing to manage for the teacher. Are you agree with me? Na kichi time ko manage kariba darkar, na kichi darkar nahi in the teaching learning process. Yes, ma'am. Someone Time ku yes, time को manage करिया गोटे बहुत बड़ा important resource, because we know time is a very important resource. Anything is lost, it can be again, we can prepare it or we can again get it, but once time has lost, we cannot get the time again. Okay, so time is a very precious resource, but we are unaware about it. Okay, mostly we are unaware about it. So as a teacher, as we know, is known as the manager inside the classroom. A teacher is called as the own chief executive of his her classroom. Okay, so as a manager, as a planner, or as a chief executive officer, the teacher has the full freedom to manage everything in his or her class. So first thing what the teacher has to manage, first thing is the teacher has to manage the time. Okay, what is the time has given, how I can take the best use of the time, because as a teacher always I have to keep in mind that
If I am going to teach for 45 minutes, this is not only the 45 minutes. This is the 45 minutes of these many students who are present inside the class. Okay. Suppose 30 students are there inside the class. Just you multiply 30 into 45 minutes. That is the time of the class. ସମସ୍ତଙ୍କର 45 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି 30ଟା ପିଲା କ୍ଲାସରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 30 ଜଣଙ୍କର 45 ମିନିଟ୍ ଯାହା that time is that much precious. Okay, so as a teacher, every teacher has to learn how to make the best use of the time. What are the specific time has given to a particular teacher? Okay, time is a very important resource. The next we will come to management of resources inside the classroom. As we know, we used to take the use of different resources at the time of teaching learning. Okay, we used to take the, as you already told, technology is a resource. Okay, and we can take the resources on any other study material is a resource, or we know we can take the teaching learning materials as a resource. So whatever the material things we are using, and we are taking the help of the material at the time of teaching learning process, as a teacher we have to learn how to manage also those things. Okay, if we can take proper use of the teaching learning materials, we can take the proper use of the technology, we can use the proper use of the study materials, then your teaching learning process will be more effective. So as a teacher, every person, every teacher has to learn make the best use of the resources. Then next we will come what other things the teacher has to manage. The teacher has to manage the students. Why? Because we know every one of us differ from each other. Each and every child is unique. Okay, and every individual has have their own rate of learning and own pace of learning. Okay, and we learn in our own style. Every child learn according to him or her on own style. So at the time of teaching, the teacher has to take into consideration of each and every student's presence, their views, their opinions, and the teacher has to learn how to manage it, because 30 students are there inside the class. You are going to teach, and you know all the students are different from each other. 30 different individuals are sitting in front of you, and they have their own level. All the students are not in the equal level. Never, it never will be possible. They are their own level. So by taking into consideration of their level, their views, their opinions, how you will manage such that everyone should get the benefit from your teaching. Okay, so that is also a skill. A teacher has to learn that managerial skill, how to teach effectively, so that every students in my class will get the benefits. Okay, so these are the things a teacher has to keep in mind at the time of classroom management. Anything is left, we also must take into consideration in classroom management. ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ କଲେ ତା ଛଡା ଯଦି ବି ଆଉ କିଛି ବି ଓପିନିଅନ ଅଛି, you can share also. ଯଦି ଆଉ କାହାର ଏଇ ଉପରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ତମମାନେ ତମ ଭ୍ୟୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବ। ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ତ କଲେ କିଛି କିଛି ଡିସ୍କସନ, ଆଉ କଣ ବି ରହିଯାଇଛି ଯଦି ତମେ ଫିଲ୍ କରୁଛ, that thing also the teacher has to take into consideration. You can also share your views. କିଏ କିଛି କହିବ? Okay, so we will move forward. Um, Now we will come to the topic. So what are the theories? Till now what we have discussed regarding classroom management, many theories are there developed regarding the classroom management. And few theories are mentioned in your material, and those are the behavioristic theory, transactional analysis, Chinet model, K model, and control theory.
Have you gone through of your material? किए सब material देखिचो कि आजी पढ़िचो कि देखिचो कि किछि जो माने अछ पचारुछि समस्तଙ୍କୁ material किछि देखिचो पढ़िचो no okay then you will not come to know what is there inside the material. Okay, you have no idea what is there inside of your material. Yes, okay, anyhow. So these are the theories what I now have and now I told to you. These are the theories are there inside of your material. The first is the behavioristic theory on the basis of classroom management. Okay, and in this theory, importance is given to reinforcement, motivation plays a very important role to manage the class. What do you mean here? The word reinforcement, according to behavioristic psychologist, reinforcement and motivation plays a very important role inside classroom management. ए दुटा टर्म रो मीनिंग कोन बुझुछ? व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज रिइंफोर्समेंट? के कहबो? सस्मिता आज्ञा मैडम कहलो कोन बुझुछ? रिइंफोर्समेंट मोटिवेशन कोन? दी जण सस्मिता अछ के एठी? आउ जणे सस्मिता भी के अछ? ओके Yes, ma'am. ओके अच्छा सस्मिता को कोन बुझुछ रिइंफोर्समेंट? कहबो? नाइ मैडम हां नो मैडम जानि न रिइंफोर्समेंट माने कोन जानि न? ओडी रे कहू न कोन बुझुछ तुम ना? तुम किछि बुझी पारनो रिइंफोर्समेंट वर्ड जदि तुम एमती किछि भी बुझुन ताहले मु पढेबार तार किछि इंपैक्ट रहिबनी, किछि वैल्यू नाही पढेबाटा। तुम माने जदि किछि सुनुन, किछि भी जदि गोटे वर्ड भी बुझी पारनो, जदि तुम रिइंफोर्समेंट कोन बुझी पारनो, मो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी विषय रे कहले कोन बुझिबो तुम आउ? ताले ए जो पाठ पढा ए क्लास रो किछि वैल्यू ही नाही, इट्स जस्ट वैल्यूलेस। किए कहि परिबो व्हाट इज रिइंफोर्समेंट? आउ किए कहि परिबो जो माने अछ एठी? लिप्सिता, जोत्स्ना, नंदिनी, अरे लिप्सिता अछ तमे? यस मैम कहि परिबो रिइंफोर्समेंट कोन? मोटिवेशन कोन? एटा तो कॉमन वर्ड गुडा कोडा तो निश्चय सुनिथिबो। आर वर्ष फर्स्ट ईयर रे तमे तो निहाती पढिथिबो ए सब विषय रे। ऑलरेडी आई थिंक तमे मन सब एबे सेकंड ईयर रे अछो ना? तो फर्स्ट ईयर रे तो निहाती पढिथिबो ए सब विषय। हां कि नहीं? यस मैम ये कहि परिबो? जानि न रिइंफोर्समेंट माने कोन जानि न वर्ड टा? जहा बुझुचो ताहा कहिलो। जहा बुझुचो।
तुमको ये थ्योरी गुड़ाक विषय में कहली तुम कौन बुझिबो तुम तो वर्ड जदी रीइंफोर्समेंट बुझी पारुनो मोटिवेशन कौन बुझी पारुनो एटा तो डे टू डे लाइफ रे हमें यूज करूची ए वर्ड गुडा मोटिवेशन वर्ड टा के बुझ सुनी ना ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। वो ताले मोटिवेशन माने कौन तमे कौन बुझुचो तम ओन वर्ड रे कुह ମୋଟିଭେସନ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। हां ताहले एटा बुझी पारुनी बोली कहलो कहि परिबिनी बोली कहउचो मोटिवेशन ମ୍ୟାଡ଼ାମ इज ए फोर्स हां हो ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଦୃଢୀକରଣ କରିବା। नहीं रेनफोर्समेंट माने भी मोटिवेशन रो ही गोटे आमे कहि परिबा गोटे मोटिवेशन पर ही रीइंफोर्स री मींस अगेन एंड अगेन इनफोर्स मींस फोर्स करे तुमको जो कामटा करिया पई ओके दैट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट ओके रीइंफोर्समेंट जेमति हमें गोटे पिलाटा भलो आंसर टे क्लास रे कहिला हमें ताकू वेरी गुड बोली कहूची एटे वेरी गुड टा होची गोटे रीइंफोर्समेंट तमे जते ताकू वेरी गुड कहलो से पिलाटा खुशी होबो आउ थरे नेक्स्ट जेतले ताकू क्वेश्चन पचारिले सी आंसर करिया पे आहुरी उत्साहित हैला रीइंफोर्स रो अर्थ होची जोटा कि हमकू गोटे काम करिया पे बारंबार उत्साहित करी दैट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट ओके सो आमे जेमति कहबा कि रीइंफोर्समेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स वर्बल एंड नॉन वर्बल वर्बल जेमति आमे कहबा सुना पिला भलो पिला वेरी गुड वेरी नाइस एक्सीलेंट ए जो वर्ड गुडा को आमे रीइंफोर्समेंट बोली कहू सेमति नॉन वर्बल जने भलो आंसर देला परे ताको पैट करिवा तार ताकू कांधरे हाथ पके बहुत बढ़िया वेरी गुड बढ़िया करछ कहबा हसीबा भलरे तांगा आंसर को सुनिमा एक्सेप्ट करिवा जे आंसर कहूची तार आंसर को भलो भाबे सुनिमा एटा कहूची हमर नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट सो एज ए टीचर every teacher have to use the reinforcement at the time of teaching inside the class ebe बुझी पारले समझते ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। okay then what is motivation motivation कोन ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋଟିଭେସନ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯୋଉଟା ପାଠ ପଢାରେ ଆମର ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। very good ଇଣ୍ଟର ଜାଣିନି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛ ତ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୋଟିଭେସନ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ନିଜ ମନରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିବା କାମ କରିବା ଖୁସି ହେବା ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହେଲା ଜଣେ ଫୋର୍ସଫୁଲି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। yes ଯଦି ବାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମେ ଦେଖିକି ଉତ୍ସାହିତ ହଉଛ ଆମେ ସେଟା କହୁଛେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ ଯେମିତି ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବା ପ୍ରାଇଜ ଦବା ରିୱାର୍ଡ ଦବା ପ୍ରେଜ କରିବା ଏଗୁଡା କହୁଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆୱାର ନିଡ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଡ୍ so need is the main cause of motivation when need is the main cause of motivation these are called as the intrinsic motivation and when we are outside due to the outside things we are motivated then it is called as the extrinsic motivation okay so motivation is a power okay and once because we know we ame kahaku kebe kichi padhei paribani kahaku kichi sikhei paribani till the individual is not self motivated jemti kebe bartaman tammanakar ete situation ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେ ପଢେଇଲେ ବି ତମେ ପଢି ପାରିବନି if you are not motivated to learn ତମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ଆସିନି ଯେ ନାଇଁ ମତେ ପଢିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଶିଖିବା ଦରକାର nobody can teach you ତମକୁ କେହି ଶିଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ okay so for that there is need of your own motivation yes and it is the internal power inside of an individual which force to you to do a work that is called as motivation there is something inside us which compel us to do the work which compel us to learn that is called as the motivation and behavioristic theory
किए बिहेवियरिस्टिक थ्योरी विषय जानिछ कहलो को थ्योरी गुडा को हमें बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कहउछ साइकोलॉजी रे को साइकोलॉजिक थ्योरी गुडा को बिहेवियरिस्टिक थ्योरी रे आसुछ Pavlov को Pavlov very good very nice आउ क्या हरलो थैंक यू आउ किए कहबो Pavlov को थ्योरी गुडा बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हम जति कहबा स्किनर ओके थॉर्नडाइक हां को JB Watson. हां Watson. Watson, okay, nice. Father of behaviorism is known as the father of behaviorism. Okay, so semanakara jo theory semane develop karichhanti. In his theories, they have given importance that reinforcement and motivation plays very important role for good classroom management. And without this, we cannot manage the class properly. So as a teacher, you have to use this reinforcement and motivation for the classroom management. Now you understand? Yes, madam. Okay. Then we will move to another theory, which is called as which is known as transactional analysis. Okay. Transactional analysis is also a theory. They have given importance that for classroom management, they have given importance on different ego state behavior. Ego state behavior means this is the concept. Every one of us are behaving on the basis of our own ego state. Okay. So what are the different ego states? Is called as a child ego state, parent ego state, adult ego state. We behave on the basis of that. And these things are also required for a good classroom management. Yes. Yes. As we know, हमको क्लासरूम रे टीचर है कि पढ़ेबार अछि किंतु टीचर को मध्य पेरेंट रो बिहेवियर करबा दरकार इनसाइड द क्लास हां कि नहीं एज पेरेंट्स ट्रीट अस मो कथार तम माने एकमत जने टीचर पाखरे पेरेंटल बिहेवियर भी रहिबा दरकार Yes, ma'am. हां कि नहीं ना तमे कहबो मु तो टीचर क्लासरूम रे पढौची मु काहे कि एज लाइक ए पेरेंट्स व्हाई आई विल बिहेव कोन कहउछ दरकार कि टीचर जने क्लासरूम भितरे पिला मानकू भलो क्लासरूम मैनेजमेंट पाई एज ए पेरेंट भाबरे भी बिहेव करबा दरकार कि पेरेंट इगो स्टेट रे रही कि बिहेव करबा दरकार कि Yes, ma'am. आज्ञा. Darkar. Yes, ma'am. yes because we know teaching teacher is the second parent okay and teaching is also must be like parenting is a skill as we know parenting is a skill खाली जे आमे छुआ मान को जन्म दे देले पेरेंट हि जिबा ताहा नु हमको पेरेंटिंग रो केते स्किल भी जानिया दरकार पेरेंट हो बोले कोन आमे करिबा दरकार सेमिति teaching teacher are called as the second parents because we know nowadays in the present generation children are spending most of the time inside the school and they are spending most of the time with teachers they are not getting sufficient time to spend with their parents in the morning they are spending few hours and the night at home they are spending few hours but most of the time a child is going to spend with teacher and teacher must be behave with children like a parent mostly in the school not only school in college also college रे मध्य lecturer माने हमर professor माने as a parent परिका हमें पिलां को behave करिवा दरकार because children do not need only your content knowledge they do not need only your information they
require certain psychological acceptance. They require some mental support. They required some guidance. So that's why every teacher has to behave like a parent. So that's why it is given importance for good classroom management. Teacher must behave from the parent ego state. Okay. Then next we will come. What is child ego state? Child ego state means sometimes the teacher has to behave like a child. You have to come to the level of the children. Suppose you are going to teach, your age is now 40, but you are going to teach the age group of the children of 8 to 10. 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛ, ତମେ କେବଳ ସେଠି 40 years ର ଲୋକ ଭଳିଆ ବିହେଭ କଲେ ତମର କ୍ଲାସରୁମ ପାଠ ପଢା କେବେ ବି କିମ୍ବା ତମ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ ରାପୋ ରଖିବା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲେଭେଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲେଭେଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସପୋଜ ମୁଁ 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛି, ମତେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଭେଲକୁ ଆସିକି ଚାଇଲ୍ଡ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। then only there will be a good rapport between student and the teacher. then only the classroom can be managed and teaching learning can be effective. ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ଏଥିରେ ଏକମତ? Are you agree with me? Yes, ma'am. टीचर को चाइल्ड पर भी बिहेव करबा दरकार, चाइल्ड मानकर लेवल को आसीबा दरकार। Yes, definitely we have to come, otherwise classroom management will not be good. Like this adult ego stage, तो सब बेले तो आमे सेमानकर पिला मानक भलिया व्यवहार करिले भी होबनी। हमको एज ए एडल्ट मध्ये सेमाने फील करबा दरकार पिला माने जे द माय टीचर इज समथिंग superior than me. My teacher is having all these things, then only they also will accept you. So you have to behave from also the adult ego state. So the according to transactional analysis, they have given importance on these ego states for a good classroom management. For a good classroom management. Like this, another theory is there, Ginet model. Okay, they also have given focus on classroom management, and here they have given importance on student autonomy. According to the Ginet model, we have to give full autonomy to our students. Then only it will be a good classroom management. And they have given more focus on how a student can learn to take the responsibility. Yes, how the student will learn to take the responsibility. That's why the Ginet model, the core, the importance of the Ginet model is that it has given importance to student autonomy and responsibility, taking the capacity of the responsibility of the students. Then another model is there known as the K model, which given more focus on self-monitoring. The main core and importance of the K model is that here importance is given on self-monitoring. Monitoring means what? It the monitoring word ta kon buझुଛ? Monitoring माने kon बुझुଛ कहलो? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର କୁହ monitoring माने kon बुझुଛ? बुझुनो किछु word monitoring word ର କିଛି meaning बुझि पारनो?
କିଏ କହିବ? Monitoring means supervising or verifying what the students are going to do. Actually, we think that it is the responsibility of the teacher, but K model has given importance that no, monitoring is not the, if we as a teacher will monitor our students, then the teaching, learning and classroom management will not be good. We must give importance on self monitoring. We will adopt such a method that every child will monitor himself and herself. Okay, so they have given importance in self monitoring for good classroom management. Okay, and another theory is their control theory. They have given focus on uh, love, fun, amusement must be there for good classroom management. Control theory is going to speak that we cannot control anyone. Okay, as a teacher, we cannot control our children. If we try to control, then it will create more disturbance. So we must give more focus on love, amusement, fun inside the classroom. And we must try to fully engage our student so that the classroom management will be good. Okay, so these are the theories which are developed regarding good classroom managements. Okay, so now we will come to the point. What are the main components of classroom management? You like to see the PPT? I will share the PPT, or it is not required. Yes, ma'am. Okay. Now screen is visible. Yes, ma'am. Yes, you see here. We are going to discuss regarding the components of management, classroom management. Here, management means we are talking regarding the classroom management. What are the main importance for a good classroom management? These are teacher's attention, rapport formation, setting realistic classroom rules, positive reinforcement, effective communication, good speaking skills. If you want, you can note down also all such things, because these are the very important things. It will be useful for you from your examination point of view also. Okay, good speaking skills, subject expertise, understanding individual expectation, understanding time management, and goal setting. I have mentioned all these points for a good classroom management. एगुड़ा सब पॉइंट गुड़ाक टिके पढ़. जदि ए भितरु को पॉइंट टा किछि गुडे तमे माने बुझी परनो, तुमको कष्ट लागुछि, कोन एटा जानि परनो, ताले पचार, ताले हमें से ऊपर डिस्कशन करिवा. किंबा अलगा भी किछि पॉइंट हेई परिबो जदि तमे फील करछो एठी भी ऐड करि परिबा, से विषय रे भी कहि परिबो. देखा जाउछि पीपीटी देखा जाउछि. Yes, ma'am. आगे मैडम देखा जाउछि. देखो ये पॉइंट गुडा को सब देखो कोन कोन कहिछि. टीचर्स अटेंशन बुझि परछो. व्हाट इज टीचर्स अटेंशन? ओके. रैपो फॉर्मेशन मैम बुझि एटा परछो. टिके बुझियो दियंतु. नहीं Rapport मैडम एटा formation बुझियो. means rapport formation means there must be a good relation between student and teacher. Rapport ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତା ଗୋଟେ ମୋର ସେ particular ଲୋକ ସହିତ ଭଲ rapport ନାହିଁ. Rapport ଅର୍ଥ ହଉଛି good relation. Okay, there must be good student teacher relation. That is called as the rapport formation. ଏବେ ବୁଝି ପାରିଲ? student ଆଉ teacher ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ relation ରହିବା ଦରକାର. Okay, that is also required for good classroom management. Next, setting realistic classroom rules. এটা বুঝি পারছো?
प्रति क्लासरूम रे तो किछि रूल थाए किंतु से रूल गुडाक जदी केवल सुपरफिशियल हबो ताहले से रूल सेटे केबे भी मैनेजमेंट भलो हबो नै रियलिस्टिक माने ठीक रूल हबा दरकार जो कड़ा की कार्यकारी करी हबो जो रूल गुडाक हम इंप्लीमेंट करि परिबा से टाइप रो रूल फॉर्मेशन हबा दरकार ओके देन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हम कथा हले व्हाट इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बुझी पल्ला आज्ञा कहलो गोटे एग्जांपल टे कहलो कोडा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट रो एग्जांपल मैम अवार्ड यस अवार्ड दवा प्रेज करिबा हला प्राइज दवा हला सेडा सब हमें कहबा जे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट गुड देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एटा तो बुझी पारुथिबो द कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव देन गुड स्पीकिंग आज्ञा स्किल ओके एटा भी बुझी पारतो आज्ञा सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज टीचर कर सब्जेक्ट ऊपर एक्सपर्टाइज रहिबा दरकार पिला माने फील करबा दरकार जे हमकु जे पढुचंदी दैट इंडिविजुअल हैज ए एनफ कॉम्पिटेंसी ओवर द सब्जेक्ट okay then only they will accept you then only your classroom transaction will be effective otherwise तमे जत्ते जहा कले भी classroom transaction effective होबो नाही so you must have the subject expertise जो subject पढौचे सेथिरे तमर expertise थिबा दरकार okay understanding individual expectation एटा बुझी पड़छो एटा बुझी पड़छो कि नहीं बुझी पड़थुवा individual मैडम जो स्टूडेंट माने तांकर जण जण को व्यक्तिगत भाबरे तांको पर्सनाल विषय रे जानिबा जानी मानु हो हमर समस्तंकर किछि ना किछि उडा आशा एक्सपेक्टेशन अछि ओके आमे एज ए टीचर समस्तंकर एक्सपेक्टेशन को बुझी परथुवा दरकार से माने कोन चाहुचंती पिला माने कोन चाहुचंती आज्ञा मैडम ओके ओके देन अंडरस्टैंडिंग टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी हमें कथा हले जे समय को मध्ये केमती एग्जैक्टली यूज करिबा प्रॉपर यूज करिबा सेटा भी गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट दरकार आ गोटे लास्ट very important is the goal setting as a teacher you must know what is your goal why you are going to teach okay goal setting you have to fix certain goals inside the classroom so these all are the components for good classroom management then next we will come to principles of developing professional relations yes this is the another unit we have completed here your unit 6 now we will come to unit 7 this is about interpersonal relations okay implications for classroom management this unit 7 is about interpersonal relationship implications for classroom management here we have to discuss about principles for developing professional relationship what are the different principles are there for developing a good professional relationship so here, before going to discuss about it, I will ask you, what do you mean by the word profession here? Profession माने कौन? What is profession? तापर हमें जानिबा जे professional relation कौन? First of all, we have to understand what is profession. ये कहबो? प्रोफेशन मीन्स वृत्ति ताले occupation कौन? Occupation जा profession का? नहीं मैडम ऑक्युपेशन वृत्ति Profession माने नहीं occupation माने मैडम वृत्ति profession माने Ma'am, पेशा professor means a job that needs a high level of training. yes good correct you are correct आउ किए किछि कहबो ताले ऑक्युपेशन और प्रोफेशन भितर डिफरेंस कोन अछि ना दिटा जागा एका जिंस
ऑक्युपेशन और प्रोफेशन दिटा जाक एका जिंस ना किछि डिफरेंस अछि? मैडम डिफरेंट अच्छी। अच्छी कौन डिफरेंस अछि जानि परनो? ओके ठीक अछि मु कहूची occupation is the thing what we do to earn our livelihood. ओके आमे बंचिबा पई पैसा रोजगार करिया पई जो कामटी करू ताकू आमे वृत्ति बोली कहू। ओके जे कोनोसी काम पैसा रोजगार करिया पई हमर ब्रेड एंड बटर पई हमर लाइवलीहुड पई आमे जो काम करू आमे ताकू ऑक्युपेशन कहू हैला। प्रोफेशन भी सेया किंतु सब ऑक्युपेशन प्रोफेशन नुह। There are certain occupation which required high level training and qualification and which has a social recognition. किछि जिनिस अछि जो काम करिकी आमे रोजगार करि परिया बोली हमर सोसाइटी रे गुटे रेकग्निशन अछि सेही काम गुडी को आमे प्रोफेशन बोली कहू। प्रोफेशन माने होची पेशा हैला आउ ऑक्युपेशन माने होची वृत्ति। तो किछि आमे एठी कहि परिबा all professions are occupation but all occupations are not profession। बुझि परला वर्तमान? आज्ञा मैडम। यस मैम। मने कर सपोज टेक एग्जांपल हमर गां रे बहुत लोक ट्यूटर करिकी ट्यूटोरियल करिकी ट्यूशन करिकी भी पाठ पढौचंती किंतु आमे सेमानंकु प्रोफेशनल बोली कहिबा कि टीचर प्रोफेशनल टीचर बोली कहिबा कि? नो मैडम कहबेनी। नो मैम। ना किंतु सेटा तांकर ऑक्युपेशन सेमाने करूचंती पैसा रोजगार करूचंती दे आर आल्सो गुड टीचर्स किंतु दे आर नॉट द प्रोफेशनल टीचर्स। प्रोफेशनल टीचर हबा कोले तुमको गोटे ट्रेनिंग दरकार तुमको किछि क्वालिफिकेशन दरकार तुमको से सब जिंस थाई कि जेतेबेले तुम से कामटी करबो तुमको सेतेबेले गोटे प्रोफेशनल टीचर बोली कहा हबो हैला। जेमति हमर अछि मिनिमम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म वन मस्ट हैव डन ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स। जने टीचर ट्रेनिंग कोर्स करिछि ताहाले ही से जने प्रोफेशनल टीचर हे परिबो। ओके सो अमेरिका बेमति हमर बहुत गां मानकरे टेलर अछंती सिलाई करछंती आमे सेमान को कहबा कि प्रोफेशनल बोली? नो their occupation is tailoring. They do tailoring for to earn their livelihood but they are not the professional tailors. Professional tailor जिनके हमर अछि हमें कुछ तापे केते कोर्स अछि हमर फैशन डिजाइनिंग कोर्स टेलरिंग पई भी किछि कोर्स जो मानकर अछि जो माने सेइथरे कोर्स करकी पाठ पढिकी हाई लेवल स्किल एक्वायर करकी से कामटा करछनी हमें सेमान को कहबे जे दे आर द प्रोफेशनल्स। सपोज टेक एग्जांपल समस्त ना सुनिथियो मनीष मल्होत्रा जे कि भलो ड्रेस डिजाइनर तांकु से कहि परियो जे yes he was a professional okay in dress designing. So the thing is that profession is certain thing which must have social recognition. आमे जेमति कहिबा कि can we tell robbery is a social profession? चोरी करिवाटा को गोटे प्रोफेशन कहि परिया कि? नो मैडम। काई कहिबानी से भी तो तांकर लाइवलीहुड ऑन करिया को करछुनी ता पई मध्ये बहुत हाई लेवल स्किल दरकार हाई लेवल ट्रेनिंग भी दरकार काहे कि कहिबानी? मैडम सेटा सोसाइटी रे ग्रहण योग्य नुहे। हाँ द थिंग इज सेइथि पे आउ गोटे एठी टर्म रहिला जे प्रोफेशन ताकू कहिबा जोटा कि सोशली रिकॉग्नाइज्ड। ओके सोसाइटी रे से काम करिया पई तुमको अप्रूवल थिबार अछि सोशल रिकॉग्निशन थिबार अछि देन ओनली इट कैन बी कॉल्ड एज ए प्रोफेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्युपेशन व्हाट इज प्रोफेशन? आज्ञा यस मैडम। मैम। Okay so we can say teaching is a profession, yes or no? Teaching is a profession for which there is need of it is a socially recognized work and it require high level qualification and also certain professional training. So teaching is a
profession. So what is the principles for developing professional relationship? तापे कौन कौन हमर प्रिंसिपल गुडाक अछि? Just you see the PPT. I have mentioned certain points here. कौन कौन लिखाई छिटे? A common clear vision of good teaching and learning. Okay, subject competency, pedagogical knowledge, relationship with colleagues, problem and inquiry based methods, well defined standards of practice and management, reflective practitioner. So these are the principles to be a professional teacher. So when we are going to talk ourselves as a professional teachers, these are the principles we have to follow, we have to obey. ए पॉइंट गुडा को पढ़ ए जदि तुमको कोडा डिफिकल्ट लागुची कोन तमे बुझी परनो पचार पीपीटी देखा जाउची तो पढ़ सब पॉइंट गुडा कोन लिखा अछि पढ़ यू कैन नोट डाउन आल्सो ए सब जिंस गुडा को तमे जदि पढुचो खाता पेन पाकरे रखचो लिखि भी पारिबो बुझी पारतो सब पॉइंट नाइ जदि कोडा बुझी परनो को आमे ताको एक्सप्लेन करिवा मैम पेडागोजिकल नॉलेज यस पेडागोजी व्हाट आर मीनिंग बुझुचो व्हाट इज पेडागोजी pedagogy word is how to teach to children. It is the way of teaching to children is called as the pedagogy. Okay, आमे पिल्ला मानको आमे कंटेंट तो समस्त जानि छी किंतु पिल्ला मानको पढेइबा केमिति आमे जहा खाली कंटेंट जानि छे कंटेंट ता पढेइ देले होबनी पढेइबार किछि गोटे स्किल अछि जोडा कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स मानकरे से स्किल ता पिल्ला मानको सिखा जाय सेति पय बीएड ट्रेनिंग दरकार एमएड ट्रेनिंग दरकार कि आमे कहू जे प्राइमरी स्कूल रो टीचर होबा पय हमकु डीएलईडी ट्रेनिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग दरकार तो सेठी हमर कोन हुए खाली कंटेंट मु मैथ जानि छी माने मु मैथ जणको पढेइ दे परबेनी पढे हमकु एमिति पढेबा दरकार जेमिति पढेला पर जणे बुझी पारिबो ओके से स्किल ता हमकु जानिबा दरकार तापरे पेडागोजी होची कोन ना हमें पिल्ला मानको पढेबा बहुत कष्ट छोटो पिल्ला मानको पढेबा पय केमिति पढेइले पिल्ला माने बुझी पारिबे सेटा को कहउची पेडागोजिकल नॉलेज से नॉलेज ता हम पाके रहितबा दरकार मु को बयसर पिल्ला मानको पढौची हमकु समस्त को पढेबार शैली एका न थाए गोटे एलकेजी रे पढेबार टीचर को पेडागोजी स्किल डिफरेंट गोटे हाई स्कूल रे पढेबा टीचर को पेडागोजी स्किल डिफरेंट ओके तो हमको ए स्किल ता जानिया को पड़िबो हमकु केमिति का पढेबा को पड़िबो से जो स्किल ता को हम कहउची पेडागोजिकल नॉलेज एबे बुझी पारलो आज्ञा मैम मैम प्रॉब्लम एंड इंक्वायरी बेस्ड मेथड एटा problem and enquiry based method ro अर्थ होची as a teacher we should not teach ready made everything to our children आमे प्रकृति रे सब कथा पिल्ला को पढेबा कथा नु हमर काम नु खाली पिल्ला को पढेबा हमर काम होची पिल्ला को मन रे से इंटरेस्ट क्रिएट करबा जहा द्वारा पिल्ला माने निजे निजे पढिया पई इंटरेस्टेड हेबे हला दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग प्रोफेशन तुमको रेडीमेड जदि जने टीचर पढाई देबे यू विल नेवर गेट द इंटरेस्ट टू लर्न ओके किछि तांको प्रॉब्लम दबा तांको बिचारे किछि क्यूरियोसिटी डेवलप करबा जहा द्वारा से माने निजे पढिया पई इंटरेस्टेड हेबे ओके आउ किछि मैम लास्ट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होची एज ए टीचर तमे जहा पढुचो किबा पढौचो सब बेले भाबिबा दरकार जे भी मोर निजर भी कोन डेवलपमेंट होबो माने मु आज जेमती पढौची काली की भी सेमिति पढेइबी
मु एजे निजे टीचर मते निजको भी इभालुएट करबा दरकार मो पढेबारे आउरी कोन इंप्रूवमेंट होबा दरकार जहा द्वारा आउरी मो पाठ पढेबा भलो इंटरेस्टिंग हेई परिबो हैला आम समस्त को निजर ओन रिफ्लेक्शन आनिबा दरकार एजे टीचर ओके सो टीचर मस्ट बी ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर निजे निजको तर्जमा करबा मु आज जहा पढेली भलो पढेली की ना मु आउ कोन करथिले पिला मानको भलो रे पढेई पाठांती सो निजर ओन रिफ्लेक्शन आनिबा दरकार आ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होबा okay so this is also the principle of teaching profession आमे डे बाय डे एज ए टीचर मध्ये हम निजर पढेबा शैली रे पढेबा स्टाइल रे भी इंप्रूवमेंट करिया पय आमे चेष्टा करिवा दरकार ओके बुझि परलो आज्ञा मैम यस आउ किछि डाउट नहीं ठीक अछि ताले नेक्स्ट आगु को जिबा आमे केते प्रकार स्टूडेंट को प्राय हमर क्लासरूम रे देखिया को मिले हमको what are the different types of student mostly I have mentioned certain types of student as dependent students silent students compliant students independent students discouraged students snippers snippers means low self esteem the meaning of the word snippers means low self esteem then heroes and attention seekers ए वर्ड गुडा सुनो तमे निजे टिके भाबो जेतलो एज ए टीचर तमे टीचर न होई थाई पारले भी एज ए स्टूडेंट भाबो ए टाइप रो स्टूडेंट क्लास रे थांती की ए सब Yes, प्रकार ma'am. स्टूडेंट क्लास रे थांती की Auntie. यस मैम आज्ञा एइथिरु को प्रकार स्टूडेंट थिले क्लासरूम करिबा बहुत सहज हुए एते मु जेते प्रकार लेखिची स्टूडेंट मानको आमे प्राय स्टूडेंट मानको एमती कैटेगराइज करि परिबा गोटे क्लास रे स्टूडेंट मानको आमे एमती ए टाइप रे कैटेगराइज करि परिबा को टाइप रो स्टूडेंट थिले टीचर को क्लासरूम नबा भलो लागे मैम अटेंशन 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 सीकर्स अर्थ कोन बुझि परलो जोटे पिला माने निजर अटेंशन खाली ड्रॉ करिया चाहन तमे देखिथियो केते क्लास रे पिला थिबे से किछि ना किछि गोटे केवल करिकी जेमिति समस्तंकर दृष्टि तांको आडू आकर्षण होबो सेथि बे से माने चेष्टा करथिबे से प्रकार स्टूडेंट को हमें कहबा जे अटेंशन सीकर्स से प्रकार पिला थिले हम क्लासरूम रे पढेबा को भल लागे नहीं नहीं Ma'am, silent student, dependent student. आउ साइलेंट स्टूडेंट्स थिले भल लागे तम माने एबे जेमते एबे साइलेंट रहउचो किछि नहीं पचारले भी मैम कहउनो ताहाले आउ को स्टूडेंट हीरोज हीरोज ओके समस्ते तो हीरो हेई परिबिनी क्लास रे गोटिए दीटा हीरो थिबे आउ मैम कॉम्प्लिएंट स्टूडेंट कंप्लेंट स्टूडेंट अर्थ जे सबोले कंप्लेन करथिबे क्लास रे जो मानकर मेन सबोले काम होला कंप्लेन करिवा से तांगो सांग मानक विषय रे कंप्लेन करथिबे नले टीचर विषय रे कंप्लेन करथिबे नले सिस्टम विषय रे कंप्लेन करथिबे कंप्लेन एज ए टीचर व्हाट स्टूडेंट्स यू लाइक टू सी इनसाइड योर क्लासरूम को प्रकार स्टूडेंट्स तमे क्लासरूम रे देखिया को भल लागे तुमको आ एठ न लेखाई थुआ भी आउटे कोन कुह नले mostly we like as a teacher the independent students independent ର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ independent student ମାନେ जो माने इंडिपेंडेंटली काम करिया को भलो पाआंती ओके
बुझी पारलो? We like to see anxious students in the class. Anxious means who have the curiosity to learn. जो क्लास रे पिला माने बेसी प्रश्न पचारंती, टीचर को सब बेले डाउट पचारंती, एंग्शियस हुंती पढ़िबा पई, ओके। आ जोठी पिला माने जो काम देले भी से माने इंडिपेंडेंटली करि पारंती, they have the self interest and the classroom will be more interesting. एबे बुझी पारलो? आज्ञा Yes, ma'am. Yes, so mostly we like independent students and anxious students. ହେଲା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ରେ ହିରୋ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ଆଟେନସନ ସିକର୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନଥିବେ। ଓକେ, ବଟ୍ classroom will be interesting if the students are curious to know and they are independent. Okay, so these are the different types of students inside the classroom. Then next we will move condition necessary for effective communication. Classroom रे effective communication पाई कौन condition दरकार? एटे देखो केते बड़ा point मु mention करिछि। देखा जाउछ पीपीटी आज्ञा मैम पढ़िलो के जण रियलनेस और जेन्युइननेस yes तापरे प्राइजिंग एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट yes Empathetic understanding, verbal communication, से भितरे अछि verbal questioning, lecture, discussion, written communication, active listening. yes, so these are the conditions necessary for effective communication. सब गुडा को टिके पढ़ी करी भाबो सतरे कोन एगुडा सब दरकार की गोटे क्लासरूम रो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पाई। एथरु कोडा जदी बुझी परनो पचार। क्लास रे एक्टिव लिसनिंग दरकार की नाही? जदी टीचर पढौथिबे पिल्ला माने सुनु नथिबे, विल द टीचर गेट द इंटरेस्ट टू टीच? नो मैम No. No, ma'am. Okay, so active listening, students must have the interest to listen, then only the person who is going to speak will be interested to speak. Okay, so active listening is must essential. Like this, her realness and genuineness. What do you mean by here realness or genuineness? बुझी पारनो? Realness and genuineness means here we have given importance. आमे जहाँ भी कम्युनिकेशन करिया को चाहूचे से जिनिसर किछि आवश्यकता थिबार अछि, सेही जो लोक जे बसचंती सुनिया पई किछि रियलनेस थिबार अछि, किछि जेन्युइन नीड थिबार अछि, then only the listener will be interested to listen. Okay, inside the class, if you will feel that whatever the discussion is going on, it is not required for me, it will never benefit for me, it has no use for me, then you will never get the interest to learn. ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ବୁଝି ପାରିଲ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? मैम आउट ନା ବୁଝି ପାରିଲନି? ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ ରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର କିଛି ପଢଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠି ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ କି? no ma'am interested ହେବେନି। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି genuineness and realness of the communication. ଯାହା ପଢା ହଉଛି ଏଟା ଆମକୁ ଦରକାର, ଏଟା ଆମର କାମରେ ଆସିବ, ଏଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଟା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଉପକୃତ ହବା ଆମେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ। ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ।
जदि तार किछि रियलनेस और जेन्युइननेस नथिबो ताहाले कम्युनिकेशन केबे भी इंटरेस्टिंग हेई परिबो नाही हैला मने करो आमे भी जहा की टॉपिक डिस्कशन करूचे तमे जदि फील करिवो नो दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी कैन द communication will be effective for you no never if you will feel that no whatever the things are going to be discussed it is useful for me mate eta darkar mu eta janima darkar then only the communication will be effective understand now ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। okay like this pricing acceptance and trust this thing is going to tell that टीचर स्टूडेंट्स भितर गोटे एक्सेप्टेंस रहितबा दरकार पिला माने टीचर को तांकर टीचर बोली एक्सेप्ट करबा दरकार जदि पिला माने टीचर को ना ना हमर जे पढौचंदी से किछि जानि ना तांको किछि जणा नाही जदि ए प्रकार मनोभाव रहिबो मध्ये ताहाले कम्युनिकेशन केबे भी इफेक्टिव हेई परिबो नाही से टीचर और स्टूडेंट भितर गोटे एक्सेप्टेंस रहिबा दरकार टीचर पिला माने को एक्सेप्ट करबा दरकार पिला माने टीचर को एक्सेप्ट करबा दरकार हैला ताहाले ही हमर टीचिंग लर्निंग टा और कम्युनिकेशन टा इफेक्टिव हेई परिबो एथरे तमे एकमत Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା। the next is empathetic understanding ए जिनसटा कोन को न बुझी परछो जदि कहि what is empathetic what is the meaning of the word empathetic empathy from the word empathy it is derived empathetic so what is empathetic किछि बुझी परछो The empathetic meanings the share the feelings of another. share the feeling of another okay आउ के कुछ कोन बुझी सकू Ma'am, able to understand. able to understand ठीक अछि empathy word ର meaning होची sympathy word सुनछो sympathy ଆଜ୍ଞା। sympathy ର अर्थ होची दया देखेबा जनक प्रति दया हैला किंतु empathy कोचे एग्जैक्ट ऑपोजिट जिंस जदि जने को हमें दया करिवा ताहाले केवल से पर्टिकुलर टाइम टा पई हमें से लोकर प्रॉब्लम टा को सॉल्व कर दे परिबा मने करो कार उडे किछि किछि असुविधा अछि हमें ताकू सेटे सिंपैथी देखि कि सहाय्य कर देबा सहाय्य करि देबा द्वारा सेही मुहूर्त रे तार से प्रॉब्लम टा सॉल्व होई जिवो किंतु फ्यूचर रे जतला आउथरे से प्रॉब्लम आसीबो हमें सेटे नथिबा ताकू सहाय्य करिया ओके तो सेही पई ଆଜ୍ଞା। आमे कोन कोन तार एग्जैक्ट सिंपैथी रो आमे एग्जैक्ट ऑपोजिट कथा कहूचे जे आमे सिंपैथी करबा द्वारा फॉर ए टाइमिंग द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बट एम्पैथी इज एम्पावरिंग द इंडिविजुअल बुझी परलो एम्पैथी रो अर्थ होची एम्पावरिंग द अदर्स एम्पैथी माने सपोज मु फॉर एग्जांपल लेबे कहूची गोटे पिलाटे परीक्षा रे किछि लेखि पारुनी आमे देखिले तमे सेठी ताकू टिके सहाय्य कर देलो से तमे जे इन्विजिलेटर अच्छो क्लास रे टिके हेल्प कर देलो से पिलाटा परीक्षा रे लिखि देला मार्क आन देला पास हो गेला सेटा को हमें कोन कहबा सिंपैथी कहबा ना एम्पैथी कहबा एम्पैथी मैडम पास होला पर सेटा लाइफ टाइम सेटा पास ही हे गले ना आमे नो डाउट ताकू टिके हेल्प कर देले सेति से मार्क आन देला टिके अधिक मार्क आन देला किंतु तार प्रकृत रे कोन एम्पावर हैला कि सी कोन एम्पावर हैला कि से कामटा करि नहीं परिया पे नहीं नहीं मैडम ना सेटा सेटा ताकू केवल आमे सिंपैथी कहला आमे ताकू टिके दया देखेले सिंपैथी हैला आगे आगे सिंपैथी हैला कोन जे से टाइमिंग पई ताकू सहाय्य कर देले से परीक्षा रे पास हे गेला किंतु सेटा ताकू डिसएम्पावर करे देला सी आउ से जिनसटा लाइफ रे आगे शिक्षा पई मते चेष्टा करिवो नाही काहे से पास हे गेला आगे से लाइफ रे केबे भी शिक्षा करिवा को चाहिमो नाही तो से प्रकार सहाय्यटा को हमें सिंपैथी कहबा किंतु एम्पैथी रो अर्थ होची जदि गोटे पिला को आसुनी हमें ताकू से जिनसटा शिखेई दवा सेटा केमिति हैला काहे कि शिखेई दवा जो द्वारा कि से प्रकार जहा आसिले भी पिलाटा थ्रू आउट लाइफ से निजे कर देई परिबो बुझि परलो आगे
ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏମ୍ପାଥି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖାଇ ପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଯେ ବାପା ମା ହେଇକି ସେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦବା, ଖୁଆଇ ଦେବାଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି, ତମର ସିମ୍ପାଥେଟିକ ବିହେଭିୟର। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତୁ ଖା କି ତୁ ଖାଇପାର କି ନ ଖାଇପାରେ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖେଇଦେବି କେମିତି ଖାଇବାର ନା, ଏଇଠି ଏମିତି ଏ ହାତରେ ଖା, ଏମିତି ଖା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ତଳେ ପକାନା, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ତାକୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇଦବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଏମ୍ପାଥି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କଣ ଇମ୍ପାଥି କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି? ଆଜ୍ଞା So empathy means empowering others. Sympathy is always disempower the individual. ଯଦି ତମେ ଛୁଆକୁ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେଇଛ, କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଶିଖିବ ନାହିଁ ଖାଇବାର। ସିଏ ଜଗିକି ରହି ବସିଥିବ, ମୋ ମା ମତେ ଖୁଆଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ହେଲା। ତ ଯଦି ସବୁବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଖୁଆଇବ, ସେ ତ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ଶିଖିପାରିବନି ଆଉ ଖାଇବାର। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଏଜ ଏ ଟିଚର ଆମେ କ୍ଲାସରେ ସିମ୍ପାଥି ତ ହବା ଦରକାର। କେତେଟା ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡିଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା କି ନା ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତମେ ନିଜେ ଉଠିକି ଯାଅ, ହେଇପାରିବୁ? ସେଇଟା ସିମ୍ପାଥି ଦରକାର, ସେଇଟା ଏମ୍ପାଥି କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ as a teacher inside the class, no doubt we will be sympathetic for our children, but we must give focus on empathetic understanding. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା how I can empower my children so that they can solve their problem themselves. ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଏମ୍ପାୱାର କରେଇବା ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲ? So there must be empathetic understanding between student and teacher. ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏମ୍ପାଥେଟିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ? କ୍ଲାସରେ ଯେ ଟିଚର ତମର ଭଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ହବା କଥା ନୁହଁ, ଆମକୁ ଏମ୍ପାଥେଟିକ ହବା ଦରକାର। ଏମ୍ପାଥେଟିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମର ରହିଥିବା ଦରକାର, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଆମର କହିବା ଶୈଳୀ ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, କେମିତି କହିବା, କେମିତି ଡିସ୍କସନ କରିବା, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍। ଏସବୁ ଗୁଡାକ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଜ ଏ ଟିଚର ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଟନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଲେଖିବା ବି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଓକେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲ ଦ ପଏଣ୍ଟସ? ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବୁଝିପାରିଲ? ଆହୁରି Yes, ବହୁତ ma'am. ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଯେମିତି ପାରାଫେଜିଂ, କ୍ଲାରିଫାଇଂ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦେନ୍ para language, okay, then silent and time, assertiveness. These all are the things required to make the classroom more understanding. ଦେଖ ଏ ପିପିଟି ଦେଖ, ପଢ ଏଗୁଡା ଟିକେ ଭଲରେ, ଯଦି ଚାହିଁବ ବି ନୋଟ ଡାଉନ କର। ଆଉ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇ ୱାର୍ଡରୁ କୋଉଟା ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି କଣ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ କୁହ, ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖା ଯାଉଛି ତ ପିପିଟି, ଦେଖା ଯାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ପଢ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଦେଖ ପଢ, କୋଉଟା ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁନି କୁହ। ମ୍ୟାମ୍ ପାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ପାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ମେନସନ କରିଛି କଣ ଦେଖ, ଆମର ଟୋନ, ପିଚ୍, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଭଏସ, ରେଟ୍ ଅଫ ସ୍ପିକିଂ, ଏଗୁଡାକୁ ପାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କହିଲା ବେଳେ କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ କହୁଛେ କଥା, ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍। ଆମ ଟୋନ କେମିତି ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଗୋଟେ ସୁଇଟନେସ ଅଫ ଦ ଟୋନ ମଧ୍ୟ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରାଏ, ହେଲା। ରଫ ଭଏସ ରେ କଥା ହଉଛେ ନା ଭଲ ସ୍ୱିଟ ରେ କଥା ହଉଛେ, ନା ଆମର ଭଲ ପିଚ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଭଏସ, ତମ ଭଏସ ର କ୍ୱାଲିଟି କଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରାଏ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ? ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁଛେ।
आमर वॉइस को टोन को पिच को आमे पारा लैंग्वेज बोली कहूचे मैम लास्ट टा कोटा लास्ट assertiveness आज्ञा assertiveness means आमे गोटे जिंस को एमिति कहबा मानकर सपोज जने के भूल भी कहिला हला assertiveness होची गोटे क्वालिटी of a teacher at the time of communicating with others यार अर्थ होची जे जने मानको जदी भूल भी कहिला ना 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 तमे बहुत भूल कले तमु किछ जणा नै एमिति कहबा अपेक्षा आमे ताकू एमिति वे रे कहि परिबा जे नै जिंसटा पार्शियली रॉन्ग बुझी परलो से जिंसटा को कहा जाय जे assertiveness को कोन कहूची बुझी परलो assertiveness रो अर्थ होची जनकर कहबाटा को आमे केमिति जते बेले भी भूल भी थाए करेक्ट भी न थाए आमे ताकू को वे रे रिप्रेजेंट करिबा सो दैट दैट इंडिविजुअल विल नॉट फील समथिंग बैड हला काकू माने डाउन करिकी कथा कहबा से गुडा कहूची गोटे रॉन्ग कम्युनिकेशन रो हैबिट मानकर जने कहला बेले जदी किछि भी भूल कहिचंती ताकू क्रिटिसाइज करिबा किंबा ताकू डाउन यू विल पुट डाउन द इंडिविजुअल ताकू डाउन करिकी कथा कहबा एगुडा को इज अ नेगेटिव कम्युनिकेशन हैला assertiveness is a positive communication जे भी जहा कहछि नो नो दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट माने जणे किछि माने आमे जण को पचारुचे किंतु जणे आंसर दोउची सेटे भूल कहले मध्य आमे ताकू डिफरेंट वे रे कहबा जेमिति कि से लोकटी केबे ना किछि नेगेटिव फील करबन जे ना ना मोर कहबाटा भूल थिला ओके आमे कहि परिबा दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट but this is related to this okay in this way you will represent that the individual will not feel anything bad so that is called as assertiveness बुझी परला कोन कहले आज्ञा मैम ताहाले ही तुमको इंडिविजुअल माने डेयर करिवे किछि कहया पे नचे तमे जदी जणन को पचारिलो से जदी किछि भूल कहले तमे ताको एते डाउन करिकि जदी कथा कहबो आउ नेवर को इंडिविजुअल तुमको डेयर करबनी आउ पचारले किछि कहबा पाई ओके सेति में हमें कहूचे जे assertiveness is a symptom for good communication yes बुझी परलो एबे के पचारुतिलो आज्ञा मैम ओके आउ किछि आउ कोडा बुझी परनो paraphrasing बुझी परलो ताटा को एक्सप्लेन करिकि भी लिखि देछि पढो ता तळे paraphrasing कोन लेखा हैछि सिठी देखा जाउछि तो पीपीटी पढो व्हाट इज आज्ञा paraphrase it is a skill which is necessary for group listening it means what you understand after listening to state in your own words so the work sorry it spelling mistake in your own words गोटे जिनसटा को सुनिला परे आमे जहा निजे बुझुचे ताको निज भाषा रे एक्सप्लेन करिवाटा को पैराफ्रेजिंग बोली कहा जाय आ पैराफ्रेजिंग निहाती दरकार तमे जदी केवल अकॉर्डिंग टू द बुक लैंग्वेज तमे जदी क्लास रे पढेइबो कम्युनिकेट करिवो ताहले पिला माने बुझी परिबे नाही हमकु सेटा को निज ओन वर्ड रे सिंपल वर्ड रे कहिले ही हमर कम्युनिकेशन टा इफेक्टिव होबो हैला हेतमे पैराफ्रेजिंग निहाती दरकार for a teacher inside the classroom बुझी परला वर्तमान सब we will move आज्ञा forward मैम आज्ञा ଆଜ୍ଞା okay then we will come to types of communication kete prakara communication achi there are different type of communication like verbal communication non verbal communication formal communication informal communication asking feedback offering suggestion okay so these are the different type of communication okay first you tell to me ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା mention କରିନି ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ହଉଛି verbal communication and non verbal communication କଣ କହିଲ verbal communication non verbal communication both are required for good communication
verbal communication सहित non verbal communication निहाती दरकार for a good communication. कौन verbal communication कौन non verbal communication? verbal communication माने आमे जहा word रे कहूचे सेटा होची verbal communication. नाउ एबे तमे देखो तम सहित मु एबे communicate करछु तमे मो सहित communicate करूछो. तमे मोर non verbal communication देखि पारु ना हो. Okay, we are not communicating face to face. Okay, केवल आमे verbally communicate करूचे. किंतु जेतेले आमे गोटे face to face class कहूचे सेतेले आमे देखिबा हमर verbal communication सहित हमर non verbal communication मध्ये थाए. जेमिति कि हमर movement of the eye, हातर movement, तम body रो movement, body language रु भी हमकु communication हमकु कथा भलरे बुझा जाए. हैला सेटा को आमे कहू non verbal communication. तो गोटे गुड कम्युनिकेशन पाई दीटा जाक दरकार. गोटे verbal communication दरकार, गोटे non verbal communication दरकार. बुझी परला? आज्ञा ଆଜ୍ଞା ma'am। Okay. So, like this, there is a formal communication, informal communication. What is formal communication? Formal communication mane, according to certain rules and regulations, formally we are going to communicate. Suppose inside a classroom, teachers communication is a formal communication. किंतु सेम स्टूडेंट मानक द्वारा मानक सहित तमे बाहर कथा होउचो सेटा को हमें गोटे कहबा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. किंतु इनसाइड द क्लासरूम द कम्युनिकेशन इज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन. बुझी परलो? गोटे पब्लिक मीटिंग रे कहूचो सेटा को हमें कहबा फॉर्मल कम्युनिकेशन. किंतु तमे तमरो बसी कि तम फैमिली मेंबर मानक सहित जस्ट कैजुअली कथा होउचो सेटा गोटे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. हैला फॉर्मल जोटे हमें फॉर्मालिटी मेंटेन करू कम्युनिकेशन करला बेले that communication is called as a formal communication. बुझी परलो? एबे वर्तमान तमे कहबो तमे घरे जेमती कथा होचो क्लास रे पढाइला बेले भी सेमिति पढाइबो कि? नो. यस. तो जोटा हमें इनफॉर्मली करू सेटा को हमें कहू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. और जोटा हमें by basis of rules, regulations, skills we are going to communicate, that is called as a formal communication. Feedback, asking feedback is also a communication. हैला सेमिति offering suggestion is also a communication. So हमें एमती communication गुडा को different type रे divide करी परिबा. So this is all about communication. I think with this we are going to end the unit, and last unit is left, that is about motivation. Okay, already we discussed little things, a little information regarding the motivation. एठा आउथरे मोटिवेशन कोन एक्सप्लेन करिकि लेखा आइचे पीपीटी रे पढ समस्ते कोन लिखि चेटे. जतला हम तुमको पचारुथली व्हाट इज मोटिवेशन एटा हम तुमको एक्सप्लेन करिकि लेखिछि मोटिवेशन पढ व्हाट इज मोटिवेशन. पढिला? एबे वर्तमान बुझी पात आमे ऑलरेडी एक्सप्लेन करि सारलेनी मोटिवेशन कोन. एबे बुझी पारला समस्ते व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. आज्ञा मैडम. Okay, so now we will move forward to theories of motivation. हमर मोटिवेशन रे विभिन्न प्रकार theory develop होइछि. Okay, different psychologists has developed different theories on motivation. Here we will discuss about Maslow's theory of motivation. सुनिचो आगुरे इस theory रो ना सुनिचो? आर वर्ष निहाती पढिथिबो साइकोलॉजी रे पढाला बेले मस्लोंकर मोटिवेशन थ्योरी निश्चय पढा हेतिबो साइकोलॉजी पेपर रे. हां कि नहीं कुहो?
ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୋଟିଭେशन ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ମୋଟିଭେशन थियोरी विषय रे? No, ma'am. ଜାଣିନ? ओके ताले एटा तमे फर्स्ट No. टाइम एटा तमरो अछि थिबो नियाति थिबो तमे पढि नथिबो बोधे किंतु डेफिनेटली थिबो साइकोलॉजी पेपर रे मोटिवेशन रे मसलों थ्योरी नथाइ तो केबे सिलेबस ही नथिबो मु भाबुछि थिबो तमे पाने पढि नथिबो बोधे तो ए ठीक अछि एटा आउथे डिस्कशन करिवा मसलों मोटिवेशन थ्योरी कहूछि जे why a individual is motivated to do a work. So Maslow has given importance that the need of the individual always motivate the individual. जदि हमर किछि आवश्यकता न रहिबो आमे केबे भी गोटे काम करिवा पई मोटिवेट होबा नाही अकॉर्डिंग टू मस्लो तो ताले हमर से आवश्यकता गुडी को कोन ना से फास्ट रे कहछन प्रथम आवश्यकता होछि हमर फिजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स इज कॉल्ड एज द बेसिक नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड माने को नीड जेमते हमें देखिए फूड क्लॉथ एंड शेल्टर these are called as the our basic needs are our physiological need हमें प्रत्येक काम करिया पई काहे की मोटिवेट होउची तमे मते भी को तमे जो एम एजुकेशन कोर्स रे जॉइन करछ तमे काहे की मोटिवेट हेकरी ए कोर्स रे जॉइन करछ तमको कोन बाध्य कला ए कोर्स जॉइन होबा पई कि जने शेयर करो योर एक्सपीरियंस तमे एम एजुकेशन कोर्स एजुकेशन रे करिया पई काहे की इंटरेस्टेड हेलो मोटिवेट हेलो बोली तो ए कोर्स रे जॉइन करछ कोन पई मोटिवेट हेलो कोन तमको बाध्य कला जॉइन होबा पई की कहिबो ना बिना मोटिवेशन रे जॉइन हेइचो किछि इच्छा नाही खाली उडे जॉइन हेइ जाइचो की कहिबो की शेयर करिवो निजर व्यू मैडम निजर नॉलेज टाकू बढ़ेया पई नॉलेज बढ़ेबा पई ताले तमर सेटा को नीड रे आसु एबे एटे देखो एते जाको जे लेखा आइछि फिजियोलॉजिकल नीड सिक्योरिटी नीड सोशल नीड एस्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एथरु को नीड ता फुलफिल होबो तमरो ए कोर्स करिया द्वारा Ma'am, self-actualization. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स जोड़ा कि मुनि ऋषि मानकर आसे तापर से स्टेज रे पहुंचला पर मनुष्यर आ किछि आवश्यकता रहे नाही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज a stage it's very difficult to reach a normal human being to that stage तमे जोड़ा कहलो नॉलेज नॉलेज ले कोन तमु किछि तमे भाबिबो जे मोर क्वालिफिकेशन बढ़िबो मते किछि सम्मान मिलिबो सेल्फ एस्टीम ओके इट विल कम टू सेल्फ एस्टीम ओके किंतु सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज सर्टेन थिंग जोटे पहुंचला पर आमे सब जिंस को रो गोटे हायर स्टेज रे पहुंच जाई परिबा ओके and this is the highest level of need of the individual and it's very difficult to a normal human being आम भले गोटे साधारण मनीष को से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज रे पहुंचबा बहुत कष्ट ओके तो मेन कथा होचे देखो एटा एटा गोटे कोन वे रे रिप्रेजेंट करा हैछि काहे की ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत लोकंकर आसी न थाए हमर लाइफ टाइम रे हमर न आसी भी हमर लाइफ सरी जाई पारे किंतु देखो फिजियोलॉजिकल नीड रो बेस ता बहुत अधिका ताठू कम रहिला सिक्योरिटी नीड्स ताठू कम रहिला सोशल नीड्स ताठू कम रहिला एस्टीम्स ताठू कम रहिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल और इन टर्म्स ऑफ ए कोन तो आमर सब बेले अधिका नीड कौन थाए ना फिजियोलॉजिकल नीड्स बायोलॉजिकल नीड्स हमको प्रतिदिन खाइबा दरकार आमको रहिबा दरकार आमको क्लोथ्स दरकार तो जोड़ा को आमर बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करिया पई जोड़ा को दरकार सेटा को हमें कहूचे फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड मोस्टली वी आर इंटरेस्टेड टू डू द वर्क्स टू मीट आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स हैला फिजियोलॉजिकल नीड्स हमर फुलफिल न हेले आमे एज ए ह्यूमन इंडिविजुअल ए ये रे रही परिबा नाही जदि हमर फिजिकल नीड्स फुलफिल होउनी ताहले हमें आउ गोटे ऊपर नीड सिक्योरिटी नीड्स को जाई परिबा ना हो कि नहीं मने कर तमे कहबो तुमको भोक लागुथिबो तुमको बहुत जोर भोक होउथो मु तुमको एठी पाठ पढे तमे पाठ सुनिमु की
No. No, ma'am. ଶୁଣୁ କେବେ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଭୋକ ଲାଗିଲା ବେଳେ ପାଠ ପଢିଲେ କୌଣସି ପାଠ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭୋକ ଲାଗିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍, ଶୋଷ ଲାଗିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍। ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଗୁଡାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଆମେ ଅଲଗା ନିଡ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଡ୍ ଫର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ आवर ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଗୁଡାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଦେନ୍ a individual move to security needs. Security need माने कौन बुझुछ? It is also called as the psychological need. जेमती हमकु आमे गोटे सिक्योर फील करबा दरकार, आमे अन्य मानकु लव एंड अफेक्शन दरकार, हमकु गोटे सोसाइटी रे एक्सेप्टेंस दरकार। These all will come under the security needs. यदि आमे सब बेले डरी की रहिबा, डर रहिबो, हमरो आमे काहा द्वारा यदि एक्सेप्ट न हबा, हमको लव एंड अफेक्शन मिलिबोनी, देन आल्सो वी कैन नॉट मूव टू द अदर नीड्स हैला। तो हमर फिजियोलॉजिकल नीड्स परे हमर दरकार सिक्योरिटी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स हैला। देन another need is called as the social needs. Social needs is for the social recognition. सोसाइटी रे आमे समस्ते चाहू हमकु समस्ते जानंतु, मते समस्ते जानंतु, मु समस्तन पाखरे केमती भलो हेबी, मते समस्ते प्रेज करंतु हैला, मोर सोसाइटी रे गोटे किछि गोटे इंपोर्टेंस रहू। That is called as the social needs. And another is called as the esteem. Esteem means self respect. Self respect. Okay, आमे सब बेले तापर नीड होची ए सब नीड, जदि फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होला, सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल होला, सोशल नीड्स फुलफिल होला, देन वी मूव टू द सेल्फ एस्टीम। आमे केमती गोटे निजर आत्मसम्मान क्रिएट करै परिबा, आमे केमती आत्मसम्मान निजर बजाय रखि परिबा, सेटा गोटे मध्य गोटे नीड। ओके, then last is called as the self actualization. These all the things are according to Maslow. Maslow कहचंदी तांको theory, and his theory is also criticized. बहुत साइकोलॉजिस्ट अछंदी जोथि पई कि तांकर theory के criticize करछन हैला। तो according to Maslow, what motivate the individual to learn is on the basis of these needs. ए नीड उडाक जदि न थांता ताहाले कोनोसी मनिष कोनोसी जिंस शिखिबा पई केबे भी मोटिवेट हेई न थांता। Are you agree with Maslow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. जदि हमर किछि आवश्यकता न थांता आमे कोनोसी जिंस करिया पई केबे भी मोटिवेट हेई न थांते हैला। तो ए जिंस उडाक मस्लो ताको थ्योरी रे एक्सप्लेन करिसेंती। इफ यू वांट टू लर्न मोर यू रीड अबाउट द मस्लोस थ्योरी हैला। आमे नेक्स्ट आउडे जिबा, काइना आउट केतरा जिंस अछि, टाइम भी सरी जाउची, आमे डिस्कशन करिवा। सेंते रीइंफोर्समेंट थ्योरी स्किनर करो, ए थ्योरीटा पढिछो स्किनर करो रीइंफोर्समेंट Yes, थ्योरी। ma'am. यस, गुड। Yes, ma'am. ताले ए विषय डिस्कशन करिया दरकार नै, तमे जानि छ समस्ते स्किनर केमती कोन को नै के करथिले एक्सपेरिमेंट से। Ma'am, ठेकुआ ठेकुआ मुसा मुसा रेड को नै मुस्ता कर हैला, रेड को नै कि से तांकर एक्सपेरिमेंट करिथिले आ सिए देखिथिले जे गोटे काम को मोटिवेट करिया पई हेले रीइंफोर्समेंट दरकार। जदि हमें रीइंफोर्समेंट दबा ताहाले इंडिविजुअल टा अधिका मोटिवेट, तो मुसा को नै कि करथिले किंतु सेटा परे जनरलाइज करथिले मनिष पई मध्य, सेटा मनिष पई मध्य उपयुक्त। मुसा को जेमति रीइंफोर्समेंट देले, रिवार्ड देले, इंसेंटिव देले, हमर लोक मनिष माने भी गोटे काम करिया पई मोटिवेट हेबे, जोडा कि हमें मोस्टली हमर एजुकेशनल सेटअप रे भी हमें व्यवहार करू। हमें पिला मान को मोटिवेट करिया को हमें कंपटीशन करू, प्राइज दो, पिला मान को प्रशंसा करू हैला। हमें सेटा करले पिला माने पाठ पढा पई अधिका मोटिवेट हेबे हैला। दैट इज कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सेमति गोल सेटिंग थ्योरी, एडविन लॉकिंग करो थ्योरी को कहा होची गोल सेटिंग थ्योरी। ए थ्योरी पढिछो? Bye, ma'am. पढिनो? No, तो ma'am. ए थ्योरी विषय टोटल क्लियरली डिस्कशन करबा संभव नुह। तो ठीक अछि, तम मटेरियल रे अछि, पढिबो, पढिले तमे बुझी परिबो ला। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन द गोल आर सेट विथ द क्लैरिटी एंड एट ए हायर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म इन मैक्सिमम एफर्ट। सेति पई ए थ्योरी ना दिया है गोल सेटिंग थ्योरी।
ए थ्योरी रे एडविन लकी तांकर इंपोर्टेंस देइचंती जे जदि गोल जनक पई क्लियर अछि ताहाले गोटे इंडिविजुअल मोटिवेट हबो तमे एथिरे एकमत गोल सेटिंग जदि जनक पई क्लियर अछि जने जदि जानिला जे मते कोठी पहुंचीबार अछि मते कोन पाइबार अछि then only the individual will be motivated to do the work. So that's why we always must give importance on goal, what to achieve, how to achieve will be possible. Jadi mana what to achieve is clear, then you will give focus on how to achieve. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। Yes, and this is emphasized in Edwin Locke's theory. Okay. Then next we will move for self-determination theory. Self-determination theory is given by spelling टा भूल हो जाइए sorry. Okay. DC and Ryan. DC and Ryan. ना ना ठीक अच्छी आर तलू को पळे आछी तो मु भाबिली बोधे भूल हो जाइए बोली. Okay. Self determination theory is given by DC and Ryan, and they have given importance that competency, readiness, and autonomy are necessary for motivation. Okay. ମୁଁ जस्ट तो तार ब्रीफली कहि दउची यार जस्ट तार कोर थिंग टा कोन से कहिथिले जे कॉम्पिटेंसी ए मोटिवेशन पाई कॉम्पिटेंसी भी दरकार एंड ऑटोनॉमी दरकार एंड रिलेटेडनेस दरकार एंड मुख्यतः से मेन फोकस करथिले ए थ्योरी रे ऑटोनॉमी ऊपर जोठे गोटे जिंस रे स्वाधीनता न थाए सेठी गोटे इंडिविजुअल केबे भी मोटिवेट हुए नाही सो से तांको थ्योरी रे कहिथिले जे कोनोसी जिनिस जदि हमकु पाइबार अछि गोल अछि इन एवरीथिंग इन द प्रोसेस इंपोर्टेंस मस्ट बी गिवन टू ऑटोनॉमी स्वाधीनता गोटे बहुत बड़ जिनिस आ ऑटोनॉमी थिले ही गोटे इंडिविजुअल गोटे काम करिया पे मोटिवेट हुए अंडर प्रेशर अंडर कंपल्सन नो वन इज मोटिवेटेड ओके दिस इज द कोर ऑफ हिज थ्योरी so these are the theories आउरी भी बहुत थ्योरी अछि सब गुडा थ्योरी तो डिस्कशन एटे हेई परिबनी तो तमे सोडा सब पढिबो निजे तापरे हमें आसीबा स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग मोटिवेशन कौन कौन स्ट्रेटजी हमें रिकॉग्नाइज करि परिबा हमरो मोटिवेशन को एनकरेज करिया एथिरे केतोडा पॉइंट देछि जेमते कि चैलेंज द स्टूडेंट्स बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ offer choice provide secure environment teach them to make their task more manageable use reward and punishment help students on internal focus of control use ambiguity occasionally often more open-ended activities to develop teach students to evaluate themselves एडा कहूची strategy to enhance motivation माने जदि आमे पिला मानक भितरे मोटिवेशन क्रिएट करिया को चाहूचे आमे कोन करिवा दरकार ए स्ट्रेटजी गुडा को अडॉप्ट कले पिला माने हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मोस्टली वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मोटिवेट हेबे हैला पढो एडा को जदि किछि कोडा बुझे पडनी कि कोन को ताले डिस्कशन करिया एडा ए यूनिट रे हमर बहुत बडा कंटेंट अछि लास्ट यूनिट रे एडा सब बुझे परछो स्ट्रेटजी गुडा ना जदि किछि डाउट अछि ताले पूछो Ma'am, use ambiguity occasionally. हाँ
occasionally ambiguity माने अर्थ होची तमे जदि रेडीमेड सब जिंस पिला मानकु कहि दबो पिला केबे भी पाठ पढिया पे इंटरेस्टेड हेबे बेले बेले तांको भितरे किछि एमिति प्रश्न पचारिबा किछि काम करिवा को दबा जोटा कि तांको भितरे ଗୋଟେ एम्बिग्यूटी क्रिएट करेबो क्यूरियोसिटी आनिमु बुझि परलो कोन कहूची जदि रेडीमेड जिंस समस्त को दिया है जीवो गोटे लोक हां से तो अछि आ पढिबा से भाबिबो हैला तांको भितरे जो ओन मोटिवेशन ता आसीबो नाही सेति आमे कोन करिया बेले बेले एम्बिग्यूटी क्रिएट करेबा दरकार किछि गोटे ताकू गोटे क्वेश्चन को मॉडिफाई करिके पचारिबा दरकार किछि गोटे एमितिया काम दबा दरकार से माने करि परछन ने जानिया पई ताकर स्ट्रेंथ ये जानिबा पई आमे गोटे एम्बिग्यूटी क्रिएट करेबा दरकार हैला आज्ञा आउ किछि पचार आ सब गुडा बुझी परछु आगु को जिबा आज्ञा ठीक अछि तापरे हमरो तमरो अछि एटे कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ए तो गोटे बहुत बड़ बड़ कथा स्ट्रेस को हमें केमिति मैनेज करिया आ पई तो बेस्ट आंसर किछि नाही because we know nowadays the most important phenomena for every individual is stress whatever may be your field tame jo field re thao na kai ki now stress is a common for every individual तो ये क्वेश्चन होची आमे स्ट्रेस को केमिति मैनेज करिया ताले स्ट्रेस प्रथमे कोन स्ट्रेस माने कोन बुझुछ कहा को हमें स्ट्रेस कहबा स्ट्रेस माने कोन हां की कहूथिलो स्ट्रेस मीन्स मानसिक चाप सेटा तो ओडिया रे कहि दिलो से मानसिक चापटा कोन काहे की मानसिक चापटा आसे मानसिक चाप होची स्ट्रेस रो ओडिया मीनिंग ता होची मानसिक चाप स्ट्रेस होची गोटे जिंस जोटा की आमे बेले बेले इच्छा न थाई की करिबा बाध्य होई की करूथिबा किंबा आमे ओभर एम्बिशियस होई की करिबा को चाहुथबा गोटे काम करि पारु नथिबा ता द्वारा हमरो मानसिक स्तर रे जो प्रकार आंदोलन सृष्टि हुए सेटा को हमें कहू स्ट्रेस गोटे जिंस तमे करिबा को चाहुनो किंतु तमे करिबा को बाध्य जदी सेटा तम पे स्ट्रेस क्रिएट करेबो सपोज तमे जेंते बे पढिया को मने को चाहुनो किंतु तमे जबरदस्ती बे 2 घंटा एटा गोटे जॉइन करियो सुनिया पाई you will not get interest it will create a stress for you जोटा कि हमर lack of interest रहला जो काम करिया पाई आमे force to do it is going to create the stress किंतु जने जदी really interested whoever कोनो से जिनिसर डिफिकल्टी लेवल केबे काहा को स्ट्रेस दिए नाही स्ट्रेस आसे केते बेले जोटा कि हमर अनिच्छा सत्वे हम जो कामटा करू that is going to give the stress बुझी परलो म कोन कहयौ चाहूची आज्ञा मैडम कोनो से जिनिसर डिफिकल्टी लेवल जो को हमको स्ट्रेस आसे नाही ओके जदि निजर ओन इंटरेस्ट अछि बहुत डिफिकल्ट काम भी हमें कर दे परबा किंतु मेन कथा होची जदि हमर लैक ऑफ मोटिवेशन अछि हमें मोटिवेट हेइनी कामटा करिया पई बाध्य होउची कामटा करिया पई then the stress is created okay आज्ञा so lack आज्ञा of motivation is also one of the cause of stress yes are you agree मु कोन कहूची तमे सेतरे एकमत आज्ञा आज्ञा मैम over expectation is also the cause of stress हैला आमे हमर निजर लिमिट थु अधिका किछि आशा करूचे ताहाले हमको स्ट्रेस हो हैला तो आज्ञा स्ट्रेस केबी अन्य कहा जो हमको केबे स्ट्रेस हेइ न थाए आमे जे भाबुचे जे बाहर सिचुएशन केबे भी हमर स्ट्रेस रो कारण न थाए आमे निजे ही निजर स्ट्रेस रो कारण हेइ थाउ किंतु आमे सब बेले भाबे जे स्ट्रेस ता बाहरु आसी कि मते स्ट्रेस मते बाहर ए फैक्टर द्वारा होची नो स्ट्रेस इज ऑलवेज ड्यू टू ऑफ योर ओन
कॉज आम निज जो ही आम स्ट्रेस होता है केतेबेले होता है लैक ऑफ मोटिवेशन रे स्ट्रेस होता है ओवर एक्सपेक्टेशन रे स्ट्रेस होता है बियॉन्ड लिमिट रे काम करबा हम पे स्ट्रेस होता है ओके सो दैट्स व्हाई स्ट्रेस इज नॉट देयर इन आउटसाइड स्ट्रेस इज देयर इन आवर माइंड तो आमे स्ट्रेस को बाहर कौन फैक्टर द्वारा आमे मैनेज करि परिबा नाही आमे जेते पर्यंत निजे चेष्टा न करछे हम स्ट्रेस को मैनेज करिया पाई ताले हमको कोन करिया पड़िबो आमे जानि जे लैक ऑफ मोटिवेशन रे स्ट्रेस होउछ ओवर एक्सपेक्टेशन रे स्ट्रेस होउछ ताले आमे से काम गुडा को करिबा दरकार हैला तो सेठी पे आमे ଆଜ୍ଞା को हाउ आमे केमिति हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेस आ जदि आमे प्रकृति रे हम स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करले देन वी कैन मैनेज आवर स्ट्रेस okay which is called as stress management so how you will recognize your stress को हमें केमिति recognize करबा इतरे किछि किछि मु मेंशन करछि पॉइंट उडा को देखो स्ट्रेस रो सिम्पटम कोन स्ट्रेस रो सिम्पटम होछि इनक्लूड सोशल मेंटल सोशल फिजिकल मैनिफेस्टेशन जेमति फिजिकल डिस्टरबेंस हैला स्ट्रेस द्वारा स्ट्रेस ता मन रे माइंड रे सृष्टि हुए किंतु तार फिजिकल सिम्पटम देखा जाए सेमति हमर मानसिक स्तर रे कॉग्निटिव डिस्टरबेंस होबा बिहेवियरल डिस्टरबेंस होबा इमोशनल डिस्टरबेंस होबा एगुडा कहूची हमर स्ट्रेस रो लक्षण मतलब हमें कंफ्यूज होबा तापरे भोको न लागिबा एंजाइटी होबा पैनिक होबा आउटब्रस्ट होबा रागी जीवा जोटा कि एंगर कोच आउटब्रस्ट होबा एगुडा कहूची हमर स्ट्रेस रो सिम्पटम ओके ଆଜ୍ଞା आ ए सब गुडा को हेई थाए जोटा कि मु प्रथमे कहली ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन लैक ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन एंड आ गुडे कोन कहली गोटे कामटा को हमें मोटिवेटेड हेइने कि जबरदस्ती करछे सेटा हम पे स्ट्रेस क्रिएट करिवो किमा हमें जानि जे मो लिमिट एते कि किंतु मु ताठू अधिक आशा करी कि काम करछि एटा हम पे स्ट्रेस क्रिएट करिवो नचेत जदि तमे तमरो निजरो ओन स्ट्रेंथ आ वीकनेस विषय जानि ना हो गोटे काम करूछो देन आल्सो इट विल क्रिएट द स्ट्रेस सो स्ट्रेस रो मुख्य कारणटा हमें निजे ही हेता ओके and it is going to when it is ଆଜ୍ଞା created in our mind it is going to reflect in terms of different behavior ଆମର physical behavior रे cognitive रे behavior रे emotion रे एटा हमरो reflect हेते stress बुझि पारले वर्तमान सब how to recognize stress ଆଜ୍ଞା then we will come to techniques for stress management हमें stress manage केमिति करिवा हला technique for stress management रे I have mentioned few points कौन करिवा जे हमें जेमति जानले ओवर एक्सपेक्टेशन होबानी हमें रियलिस्टिक गोल को फिक्स करिवा ओके डू नॉट ओवर विलिम योरसेल्फ हमें सब बेले रियलिस्टिक गोल जहा ताकू फिक्स करिवा हम लिमिट अनुसार काम करिवा सेमति स्ट्रेसफुल सिचुएशन जदी किछि होउची ताले हमें ताकू सेठू किंदी निजो को दूरेई की रखिबा हमरो जे गोटे जिंस को देखिबार वे को हमें चेंज करिवा हैला तापरे अधिका समय सोइबा निज को इंपोर्टेंस दबा निज सेल्फ ऊपर निज रिक्वायरमेंट को स्ट्रेस माने इंपोर्टेंस दबा अन्य द्वारा प्रभावित होई कि काम करबानी निजे निज को कोन दरकार निजे कोन करिया को चाहते से अनुसार काम करबा ए सब द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट हे पारे बट ए सब कहिबा भारी इजी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस करबा एटा बहुत कष्ट ओके ଆଜ୍ଞା so with this we will stop here हमर टाइम भी हे गलानी और कोन आज डिस्कशन कले कहिलो जस्ट जणी के कहबा आज हमर कोन टॉपिक ऊपर हमें टोटल आज डिस्कशन कले मैम क्लासरूम मैनेजमेंट यस हाउ कोन करू क्लासरूम मैनेजमेंट ऊपर डिस्कशन कले तापर कोन ऊपर डिस्कशन कले थ्योरी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट यस
Components of classroom management. Okay. तापर हमें डिस्कशन कले मोटिवेशन कौन डिफरेंट मोटिवेशन द थ्योरी गुडा को कौन ହେଲା Ma'am, types of students. हाँ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट केमितिया क्लासरूम को हमें केमिति मैनेज करिए कले हमें क्लासरूम एनवायरनमेंट केमिति स्टडी करिवा दरकार केमिति जानिबा दरकार मोटिवेशन कौन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कौन तापर भी लास्ट हमें डिस्कशन कले स्ट्रेस कौन केते प्रकार स्ट्रेस अछि आ स्ट्रेस मैनेज करिया पे कोन टेक्निक्स और स्ट्रेटजी अछि ओके so ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ last 2 hours we have discussed about all these concepts overally तो सब डिस्कशन करी छे किछि किछि भी रहि जाइते पारे because the time is not sufficient to touch each and every concept କିନ୍ତୁ mostly what is the important things we have covered here yes so जदि Yes, किछि डाउट पचारो मुझे टाइम हेगलानी भी बोधे हम स्टॉप करी Ma'am, किछिटा important question. कोन कहलो किछिटा important question कहबे. ना क्वेश्चन स्ट्रक्चर सहित तमर परीक्षा सिस्टम सहित आई एम नॉट एसोसिएटेड मु जानि नि तमर केमतिया क्वेश्चन आसुतो तमे बोधे वेबसाइट रु पाई परिबो तमर इग्नोर वेबसाइट रु कोले बोधे पाई परिबो कि न तमे रीजनल सेंटर रु बोधे पाई परिबो मो पाखे से किछि नाही तमर को टाइप रो क्वेश्चन आसुची कोन मु जानि नि से विषय आउ किछि डाउट ना स्टॉप करिवा सरिला क्लास आज हमर दीटा ब्लॉक तीनटा क्लास थिला मोर काली ठो क्लास नाही बोधे आउ जणे साथी मानम बोधे ए पेपर आउ बाकी ब्लॉक पढेबे so we will end here thank you, ma'am. okay ଆଜ୍ଞା thank you all ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Thank you, ma'am. Thank you. thank you all okay we will leave here Yes, ma'am.